गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जय जगन्नाथ मैं आपन को स्वागत करूची StudyIQ OPSC चैनल रे आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल जो मैंने ऑनलाइन अच्छी आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट वी कैन स्टार्ट इट अर्ली Okay, so today is 12th of July and we'll discuss national, international news as well as Odisha related. Okay, so let's start the discussion. Good morning, Devasis Bharti Panda. Good morning. Good morning, all of you. Okay, so let's start. I hope audio and video both are working fine. So, simultaneous election. Today is the first news. Good morning, Sasmita. Good morning, all of you. Simultaneous election. The first topic. Gender gap report. Gender gap report. Maratha fort. Maratha fort. Gender gap report. Maratha fort. And next is manuscript heritage and leopard tooth as well as few Odisha related. Okay, let's start. Simultaneous election. Simultaneous election bill gives election commission unbridled powers. Loopholes remain ex CJI, Chief Justice of India. So remember, election commission consistently is in news. तो you can expect question जो मैंने भी ए वर्ष एग्जाम दउचंदी prelims रे question हो किंबा mains रे question हो, you can expect questions from this election commission of India. So election commission of India is important as far as your prelims and mains point of view. Okay, so let's see in detail. Key concern होची excessive powers to the election commission. Excessive powers to the election commission. Setmen se कहूची unbridled power. Former Chief Justice of India argue that bill grants unchecked authority to the Election Commission of India. The recent PIL or the Supreme Court case is there. We have already discussed regarding the revision of poll in Bihar. So that action of election commission has been questioned. So PIL has been filed. So election commission ro authority jurisdiction को नहीं कि लगातार भाव रे question raise करा जाउची. The election commission would have broad discretion over determining feasibility of simultaneous poll. Determining of feasibility of simultaneous poll. Okay, feasibility. Simultaneous poll रो feasibility को find out करिबा. Scheduling elections, election रो scheduling को देखिबा. Extending or curtailing terms of legislatures in certain situation. जहारो 5 वर्ष कारण हमर 29 को हमें टारगेट करिचे. So once 29 पूर्वरु end होची, that means that must be extended so that we can conduct the simultaneous election. एवं जहारो 29 को exceed करिवो. Okay, तारो जमती हमें तकु बिफोर 29 तकु कर्टेल कर देवा यानी कि तारो टर्म को एंड करा जिवो. Then only we will be able to conduct simultaneous election. So here also you will see there is a question mark कि कर्टेल करिवा या एक्सटेंड करिवा. Although it has the parliament has the power. Parliament चाहिले तो कमेंट करिकी एक्सटेंड करि परिबा कर्टेल करि परिबो. Loopholes देखिबा. No clear constitutional safeguards to prevent arbitrary decision. तो ई जो feasibility को decide करिबा, scheduling elections करिबा and extending and curtailing the tenure या ऊपर कौनसी से बड़ी constitutional mandate दिया जाए नहीं. So there is no such constitutional safeguard. Ambiguity in how to synchronize terms of Lok Sabha and state assemblies. Okay, को भली भावरे synchronize करा जिवो terms को, that has not been decided yet. जदि after simultaneous election there is a possibility कि for any reason, any circumstances, mid-term poll हुए यानी कि the government in the state level से dissolve हो जाए. Next best government find out करिवा is quite difficult, though कौनसी party majority prove करि पारंती नहीं, and then you have to conduct the election. If you have to conduct the election, further आपण ताकू तार power को curtail करिवा को पड़िबो. So a democratic elected government ताकू पावर को आपण कर्टेल करिवे या तार पावर को एक्सटेंड करिवे. दिस इज इटसेल्फ ये क्वेश्चन मार्क. लैक ऑफ क्लैरिटी एंड preservation of federal structure and autonomy of the state.
तेणु ये जो कार्टेलिंग करवा एक्सटेंड करवा इटसेल्फ सबुठ बड़ चैलेंज होची कोन कारण हमर जो फेडरल स्ट्रक्चर अछि आपण देखिबे स्टेट्स को जो पावर दिया जाई छी दैट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सेंटर और द यूनियन जस्ट रिमेंबर दिस थिंग आपण दी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को देखिबे व्हाई पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस आर सो मच वल्नरेबल because they simply derive power from the state government. State government wants, then only panchayat raj institutions will have the power. If the state government power devolve kariba ko chahiba nahi, obviously they do not have power. But in contrary to that, if you see the federal structure, union and state directly derives power from the constitution under the 7th schedule of Indian constitution, that is the state list. Okay, so the state list yani ki states are autonomous, right? States are autonomous, they have their own power structure, they have their own jurisdiction. Tenu federal structure ko koti na koti ye challenge karibo if kote elected government ko you will curtail its tenure before 5 years or you are simply extending the tenure after 5 years as well. Possible conflict with the basic structure doctrine. बेसिक स्ट्रक्चर हूँ कौन ना फेडरलिज्म ये फेडरल स्ट्रक्चर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ये बेसिक स्ट्रक्चर कोठू आसीथिला ना आपनकर केशवानंद भारती केस 1973 रे ओके व्हिच प्रोटेक्ट्स सेपरेशन ऑफ पावर एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस सेपरेशन ऑफ पावर एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस ओके साइमल्टेनियस इलेक्शन कौन देखिबा refers to holding elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies at the same time. At the same time, both the union level or House of the People or Lok Sabha and state legislatures will be conducted at the same time once every 5 years. Currently, elections are held separately for Lok Sabha and state assemblies. आपण देखिबे वर्तमान बिहार रे इलेक्शन होबा को जाउची प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर यूपी रे इलेक्शन होबा को हबो महाराष्ट्र इलेक्शन लास्ट ईयर आपण को हेतला सो दिस shows कि यूनियन सहित या लोकसभा सहित सब इफ यू सी ओडिसा रा इलेक्शन टी लोकसभा पार्लियामेंट सहित होउची बट देयर आर स्टेट्स जहां जो मनकर सेपरेट टाइम रे इलेक्शंस गुडी कंडक्ट करा जाउची बट टारगेट कोन अछि साइमल्टेनियस पोल साइमल्टेनियसली यानी कि वोटर वुड वोट बोथ फॉर द असेंबली एज वेल एज द लोकसभा जदि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिबे 51 to 67 ड्यूरिंग द नेहरूवियन एरा इंडिया हैड साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर बोथ लोकसभा and state assemblies. The practice broke down due to premature dissolution. Actually, this is the apprehension, premature dissolution. Once you conduct the simultaneous election, पूरी जदि से बड़ी premature dissolution हुए, president rule implement ही जाए, what would be the next then? ताले जो newly elected government तारो power को पूर्ण तरह अपन curtail करेंगे, right? So it's a democratic process, democratic way that government has been elected. So this is the question of state assemblies and the Lok Sabha in the late 1960s. Since then, asynchronous elections have become the norm. Asynchronous in the sense tapare in a different time apankara elections gudiko chalichi. Arguments in favor, arguments against ame dekhiba simultaneous election. If you see arguments in favor, first one is the reduced cost and time. Okay, different time रे आपनकर elections conduct करेवा, that means leading to public expenditure, high amount of public expenditure. Administrative efficiency गोटे पोलिंग बूथ हम से स्टेट भी असेंबली इलेक्शन हो सेंटर भी हो लोकसभा हो तेणु यू हैव टू अलोकेट डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट पोलिंग बूथ्स जदि अलग अलग टाइम रे इलेक्शन हो लेस डिसरप्शन ऑफ द गवर्नमेंट मेसिनरी कारण आपण जानिथिबे सिक्योरिटी फोर्सेस सिविल जो ऑफिशियल्स माने होछन सेमान को इलेक्शन ड्यूटी रे रखा जाए फोकस्ड गवर्नेंस कारण देयर आर चांसेस सपोज आपण जानिथिबे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोनोसी ना कोनोसी स्टेट रे इलेक्शन होता है एवं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हमको लागू करबा को पड़े वंस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अप्लाइड और इम्प्लीमेंटेड देन आपनकर कोनोसी प्रकार डेवलपमेंट वर्क ही पारे ना इट्स अ काइंड ऑफ paralysis, you can say policy paralysis. No such major decision will be taken. Curbing populism avoids frequent populist promises. कहीं ना यूपी यूपी रे इलेक्शन हला लेट्स गो फॉर के आजी स्कूल स्टूडेंट्स मान को फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो काली बिहार रे अछि फ्री लैपटॉप दिया जिवो परदिन झारखंड रे अछि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जिवो द पॉपुलिज्म मेजर्स और सिंपली व्हाट वी कॉल द फ्रीवीज
political parties announce freebies to attract voters. Better voter turnout, because sometimes fatigue ase कि बारंबार इलेक्शन हवा वोट हवा because let's say let's take this example of Bihar I mean 40-50% people जो मैंने वोटर एक्चुअली जो यूथ वोटर अच्छे जो मैंने से माने माइग्रेंट वोटर्स दे हैव टू कम बैक देयर स्टेट एंड वोट सो दिस इज वन सच सर्कमस्टांसेस जो जगह से माने बारंबार एभली कण दे हैव टू बियर द एक्सपेंसेस राइट कमिंग बैक एंड गोइंग अगेन टू देयर वर्क तेणु ये जो जिनस अच्छी बेले बेले फटीग कर दिए जो वोटर टर्नआउट इज समथिंग वेरी लेस arguments against federalism at risk undermines autonomy of states. Kahinki autonomy of states? Because you have curtailed or extended. That means state jo direct power achieved from the constitution that has been undermined, right? Logistical challenges, because such a huge country, such a diverse geographical diverse area, such a diverse community, you have tribals, you have scheduled caste, you have to conduct that election as well. एवं देखिए गोटे गोटे पहाड़ी इलाका रे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख उत्तराखंड से एरिया रे पांचटा वोटर थिबो गोटे पोलिंग बूथ भी तांगा पई सेठी अलोकेट करा जाइथिबो सो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस इज अनदर थिंग Constitutional amendment needed, yes, of course. Article 83, 85, 70, 172, 74 plus 356 among other states. E jinsu gudik among others, e jinsu gudik among amend karibaku padibo. 83, 85 jota apan karo tenure of Lok Sabha, 172, 174 tenure of state legislative assembly plus 356. Why 356? कारण मुझे जो apprehension मु अपन को कहूची कि suppose जे कौन सी गवर्नमेंट जदि चाहिए प्रेसिडेंट रूल लगेला व्हाट वुड बी द नेक्स्ट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गला नो मेजॉरिटी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट देन व्हाट वुड बी द नेक्स्ट अल्टरनेटिव इलेक्शन देन व्हाट नेक्स्ट दिस इज व्हाट इज ए अप्रिहेंशन पॉलिटिकल इम्बालांसेस कहीं ना गोटे टाइम रे जदि इलेक्शन हुए नेशनल इशू ओवरशैडो दो रीजनल इशू ओके ये गोटे फैक्टर ही पारे नो क्लियर मेकानिज्म दैट इज लॉसेस मेजॉरिटी मिड टर्म जगह जो जिनस आम डिस्कस करूचे बारंबार से जिनस ही अप्रिहेंशन रोचे रिकमेंडेशन को माने करूथले लॉ कमिशन एंड नीति आयोग hold two sets of election every 2.5 years, one for the center and half of the states, another for the remaining state. This could be explored. अढ़ाई वर्ष रे गोटे इलेक्शन होउची. Use constructive vote of no confidence to prevent mid-term dissolution. Constructive vote of no confidence. Okay, ये गोटे जर्मनी रिलेटेड गोटे प्रोसेस एटा कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. नो कॉन्फिडेंस फॉर द sake of bringing no confidence सेट नुहे constructive vote. Okay, तमाने जो current government अछि lost the majority and the alternative must get the majority and start the government or form the new government, you can say. Anyway, moving to the next topic, gender gap report. View India's gender gap report ranking as warning. कौन warning देखियो? Latest status देखिए global gender gap report. India ranks 131st out of 148 countries. India ranks 131st out of 148 countries, down from 129th in 2024. Despite a slight increase in its overall score from 64.1% to 64.4%, the overall score has been increased, but rank has been gone down. That means यदि आपनकर जो कंटेम्पररी दोज कंट्रीज पैरेलल टू इंडिया दे हैव परफॉर्म्ड बेटर तेणु से सेमानकर रैंकिंग ऊपर को पड़े. दिस प्लेसेस इंडिया अमंग द लोएस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज इन साउथ एशिया, ट्रेलिंग बिहाइंड श्रीलंका, आवर नेबरिंग कंट्रीज नेपाल 125, भूटान 119, बांग्लादेश 24. दिस इज क्रूशियल एंड बांग्लादेश 24 is quite surprising. कहेंगे कि कोई पर why 24 in Bangladesh? Because of हमें आगुरु पे डिस्कस करी चे जो ग्रामीण बैंक अच्छी मोहम्मद यूनुस जो नोबेल लॉरेट और जो इंटरिम गवर्नमेंट इंचार्ज रचनी दैट पर्सन प्लस
Bangladesh has focused more on the labor-intensive and labor-oriented industries, particularly textile industry, shoes industry, and in those industries, women have been engaged a lot. तो जो थी पाएंगी women empowerment through economic empowerment, women empowerment ही जी, and economic empowerment leads to social empowerment, political empowerment as well. जो थी पाएंगी ये जो gender gap जो report अपन को better देखिबा को मिलु जे कोठी बांग्लादेश रे. Anyway, moving further, why this should be viewed as a warning? Gradual slide in rankings despite minimal score gain. India's ranking has slipped even with a modest uptick, 0.3% points, meaning slower progress relative to peers. तेणु peer मानंकठु जो माने हमर competitor थिले से माने हमठु better perform कले जोथि पाएंगी their rank has increased but amara कमी जाइछि. The broader regional context shows countries like Bangladesh, Nepal pulling ahead, indicating India is falling behind. So neighboring countries and in South Asia re Amita Raja, right? In South Asia region, India is the king, but still we are far behind these in comparison to these countries. Dimension-wise breakdown. Number 1, economic participation and opportunity. Gender empowerment जेतबेले आपनकर क्वेश्चन आसे जेमती गोटे क्वेश्चन आसे थला कि एग्जामिन और द डिस्कस इंडियाज वुमेन स्टेटस ओके थ्रू या स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन ए टाइप रो क्वेश्चन ता थला. सो व्हेन वी से स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन दैट मीन्स यू हैव टू कवर it would be a multi-dimensional answer. सेठी आपन को पॉलिटिकली लिखिबा को पड़िबो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट रे भी लिखिबा को पड़िबो, सोशल एस्पेक्ट रे लिखिबा को पड़िबो, इंटरनेशनल अरीना रे भी लिखिबा को पड़िबो, प्राइवेट सेक्टर रे वुमेन माने केमती परफॉर्म करूचंदी, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर रे स्लाइटली यू विल फाइंड जदि ऑर्गेनाइज सेक्टर तो ठीक अछि बट ऑन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे पैरिटी रहू नाही. दैट मीन्स फॉर द सेम वर्क मेल are given more salary than the female, right? So ये गोटे problem होचे. Simply you can take the example of Bollywood, let's say, okay, and you will find the like 10 times 15 times of difference between the male lead actor and female lead actor. So उनका भीतर pay parity रहू नहीं, disparity रहूचे. Similarly आपण बाकी जगह हम politically देखि परिबे जो बर्तन हमें गोटे recent amendment नहीं किया से जो to give 33% reservation to the women. Say gote I mean it's a good initiative but implement हवा को आरबी बाकी होची कारण सेंसस पर सेटा को implement करा जिवो. तनु ए टाइप रो क्वेश्चन आसले मल्टी डायमेंशनली अपन को कवर करबा को पड़िबो. Now coming to this, economic participation and opportunity score improved to 40.7%, but still among the bottom 5 globally, ranked 144. तनु economic participation and opportunity जदि आपण देखिबे 40.7%. Women labor force participation is just 45.9%. Okay, 45.9%, and estimated earn income parity stands at 29.9%. Clear? And women labor force participation जदि आपण देखिबे it is higher in case of the rural India than the urban India. That is quite interesting. It is higher in case of rural India. Basically, we can expect in urban India, women labor force participation would be higher. But unfortunately, it is the rural area, this female labor force participation is higher. Why? Because in the rural area, the male member, they have migrated to some other states or cities for livelihood opportunities, better livelihood opportunities. So the women at home, they are managing, let's say, agricultural work and all those household economic activities. Let's say जदि किछि छोटो मोटो लैंड अछि सेठी कल्टिवेट करियो या पोल्ट्री अछि डेयरी अछि सेमन को घरे तो से जिंस को एमाने मैनेज करूछन, राइट, वुमेन. सो दैट इज द रीजन इन रूरल इंडिया women participation is slightly higher than the urban area. Anyway, educational attainment, if you see, high scores of 97.1% as a strong area for India with gains female literacy and higher education. So higher education bhi participation you will see, I mean at a lower side, specifically जदि आपण STEM को देखिए, STEM को ना science, technology, engineering and mathematics. In these four subjects, in the four areas, you will see that women participation or the girls participation is less.
So government is trying to improve that participation of the women or the female candidate in the STEM segment or the higher education sector. Health and survival, slight improvements driven by better sex ratio at birth and increased healthy life expectancy, but still lacking full parity. Health and survey, if you see that जो अपन schemes गुड़िक अच्छी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ and gender discrimination against जो law गुड़िक अच्छी sex determination जो prenatal ताको ban करा जाए ची completely, that is offense, cognizable offense, non-valuable offense. तो ये जो जिनसे गुड़िक पाई better sex ratio improve ही चमरो. Political empowerment आपण देखिबे the weakest domain, सबुटु weakest domain. Okay, in fact जदि आपण African countries गुड़िक देखिबे, they are performing well in terms of political empowerment in with respect to the women. The weakest domain कौन? Female representation in parliament fell from 40.7 to 13.8% and ministerial roles shrank from 6.5% to 5.6%. So the जो topmost position आपण देखिबे politically say who's the member of parliament and the cabinet ministers or the union ministers, so that number has also declined. Sub-index score declined by 0.6 points year over year. Broader implications देखिए, despite higher score, India continues to lag globally, indicating stagnation. Stagnation in the sense gender empowerment. The political empowerment crisis suggests structural barriers. Structural barriers in the sense the sphere, the political sphere, are dominated by those patriarchal mindset politicians, those who do not allow women to participate in the political arena. Right? तो जो male politician या जो माने playing a major role in the political sphere, say माने ही they have this patriarchal mindset or attitude, those who are creating the barrier to enter for this female participants. जदि आपण पंचायत राज institutions को देखिबे, in fact it's been mandatory as for the 73rd and 74th 33% reservation. Odisha became the first state who gave 50% reservation in that domain. So due to this reservation policy, things have changed. But से जो culture हमारा अच्छे ना पंचायत पति आपण से जो पंचायत वेब सीरीज यदि आपण देखिथिबे, सेठी प्रधान कहिला माने प्रधान is not मंजू देवी, प्रधान is male, the husband of the मंजू देवी. तो सी जो concept अच्छे ना पंचायत पति से आज भी चली. I mean the actual सरपंच से केवल साइन करूचन या टिपो चिन्ह दउचन, but actually the full function किए देखुची the husband of the सरपंच. तो ये होची आपनकर political atmosphere performance जदि देखिबे. Even educational gains have not translated into economic gains, reflecting persistent social norms and workplace hurdles. एक तो after marriage there are, yes, there is still no female CJI. I think जणे हबा को जाउछन, let's see. तो कोन आपण कहउथली मु, हाँ, persistent social norms. Even if female have this qualification, they are not allowed to work as well, because it's the duty of the these women to look after the family, to look after the children, right? तेणु ये भी गोटे जिनस होची social norms, patriarchal mindset कि सेमान को काम करिया दिया जीव नाही, because they will take care of children and the elderly population or elderly people at home. Similarly, workplace hurdle as well. आपण से जो maternity benefit act आसिला परे things have slightly changed, but सेटा को जदि आपण corporates या MNCs गुडी को देखिबे, सेटी कोन होची women candidates are not given preference with respect to top management level because of this maternity benefits. They have to take leave and unnecessarily they have to the companies have to pay those women. तो सेति पई समाने केबे प्रमोट करंती नाही, and top management के लेवल where top management level रे भी there are, I mean, restrictions are there. I mean, deliberate restrictions not to give them promotion and all. So this is what happening actually in the real world. Without stronger intervention, India risk being permanently sidelined as other nation accelerate toward parity. तो बाकी countries माने better perform करूचन. Okay, so automatically हमें धीरे धीरे side ही जाउछ.
Policy perspective देखिबा the current pace global gender parity may take over a century. India's progress is critically low. हमको आउरी 100 वर्ष लागि पारे. Persistent gender inequality undermines inclusive growth, weakens societal resilience, limits economic potential. कहीं ना इकोनॉमिक पोटेंशियल जे आपनकर वर्तमान से अछंती आईएमएफ रा गुरु चीफ थिले क्रिस्टीना लगाडे या समथिंग तांका ना अछि से थरे कोट करथिले कि women will be given chance to perform in the workforce, then India's GDP will grow something around 9%, 9.5%. So this was her statement. तेणु इकोनॉमिक पोटेंशियल भी अच्छी, although thanks to this unorganized sector, especially the gig work आसिला पर खास करके unorganized sector रे after this e-commerce and this digital platforms, things have changed. Work from home होउची, it's kind of accommodative कोण. Now women, they cannot give 8 to 9 hours job, so they are only opting for 4 to 5 hours after the family household work पर whatever time they have, they are giving or they are working with those companies or those jobs. So, see kind of what a platform provide koruchi. Addressing this is essential for achieving national goals like 30 trillion economy by 2047. It requires women's full participation in labor, leadership and national life. Okay. Fine. Moving to the next. Call to action. Kono हवा दरकार, what must change, strengthen political representation. आपनको पाई गोटे क्वेश्चन, as per which constitutional amendment act women reservation दिया जाइए, comment section में आंसर करिवे. Accelerate economic inclusion in terms of pay parity, equal pay, workplace protection, leadership opportunities. Okay, ये सब निहाती दवा दरकार. Link education to employment in the sense की स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड एजुकेशन दवा दरकार. सेफ ट्रांसपोर्ट यानी कि सेफ्टी एट वर्क प्लेस एज वेल, फ्लेक्सिबल वर्क फॉर वुमेन. फोकस एंड एनफोर्समेंट, रूट आउट जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड एलिमिनेट कल्चरल बैरियर्स. जेंडर बेस्ड वायलेंस को रूट आउट करिबा, कल्चरल बैरियर को एलिमिनेट करिबा एंड स्पॉटलाइटेड बाय ऑनगोइंग प्रोटेस्ट एंड केसेस ऑफ वायलेंस. ओके, कौन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोंतु, आज फॉर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो रिसेंटली पार्लियामेंट रे पास करा जाइतिला, रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट. आंसर करिवे. नेक्स्ट देखिबा मराठा फोर्ट. यूनेस्को ऑफिशियली इंस्क्राइब द मराठा मिलिटरी लैंडस्केप ऑफ इंडिया on its World Heritage List during the 47th session of the World Heritage Committee in Paris held in July 2025. This recognition increases India's total UNESCO World Heritage Site to 44. मन रखते हुए 44 मराठा फोर्ट को World Heritage List रे include करा गला by the World Heritage Committee in Paris held in July 2025. These forts built between 17th and 19th centuries, starting from Chhatrapati Shivaji Maharaj in the 1670s through the Peshwa era, represent India's unique military engineering tradition. Okay, unique military engineering tradition. The sites demonstrate strategic integration of terrain, hill forts, plateau, coastal island structure, reflecting sophisticated adaptation across Western Ghat, Konkan coast, Deccan Plateau, Eastern Ghat. तो से टाइम रे स्ट्रेटेजिक पोजीशन रे गोटे मिलिटरी फोर्ट इरेक्ट करिवा या कंस्ट्रक्ट करिवा, इट वाज क्वाइट कमेंडेबल. दैट इज द रीजन जोति ପାଇଁ कि ताको हेरिटेज लिस्ट रे इंक्लूड करा जाइछ. द नॉमिनेशन वाज इवैल्यूएटेड अंडर कल्चरल क्राइटेरिया, highlighting these forts as outstanding examples of architectural ensembles and their association with Maratha political and military history. Okay. Significance. Acknowledges next level indigenous military innovation. तो से समय रे मराठा साम्राज्य रे भी जो टाइप रो मिलिटरी इनोवेशन थिला, सो इट इज समथिंग आपण कहि परिबे जो कोन नि सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हमर पूर्वज माने जति एमती करथिले तो व्हाई कांट वी. Strengthens efforts towards heritage conservation,
academic research and tourism, heritage conservation, academic research and tourism, highlights the ingenuity behind Maratha defensive networks and their ecological harmony in diverse geography. Okay, so these are the few features of that fort. Next, manuscript heritage. India to host Manuscript Heritage Conference. India will host the first ever international conference reclaiming India's knowledge legacy through manuscript heritage from September 11 to 13, 2025 at Bharat Mandapam, New Delhi, coinciding with the anniversary of Swami Vivekananda's iconic 1893 address at the Parliament of the World's Religions. Okay. शिकागोरे देइथिले भाषण स्वामी विवेकानंद तो ता सहित कोइनसाइड करूची 7 सेप्टेम्बर 11 रु 13 रे इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट. The conference will spotlight India's repository of 10 million manuscript. बर्तमान सरकार आपण जानि थिबे मैन्युस्क्रिप्ट गुडी को डिजिटलाइज करूचनी कारण मैन्युस्क्रिप्ट 1000 इयर्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट को ताकू प्रिजर्व या कंजर्व करबा इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो ताकू डिजिटली कन्वर्ट करा जाउची सो दैट knowledge could be shared with upcoming generations as well. Nearly 500 delegates, including 75 distinguished scholars, cultural custodians from India and abroad, will attend. Conducted in a hybrid format, the event facilitates both in-person and virtual participation. The online session भी रहिबो, enabling increased national and international reach. Focus areas and themes. Key sessions will cover conservation and digitization practices, metadata standards and paleographic studies, ethical custodianship and legal framework, AI-driven archival practices, integration into academic curricula. Okay, ता सहित भी किसी इवेंट्स अच्छे जमते एग्जिबिशन ऑफ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स ये सब भी रहिबो. लाइव कंजर्वेशन डेमोन्स्ट्रेशन, वर्कशॉप, कल्चरल परफॉर्मेंस एंड स्पेसेस फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स फोकस स्टार्टअप. Okay. Adoption of New Delhi Declaration and Manuscript Heritage. So whatever decision will be taken, किछि जो conclusive discussion हबो तो ताको कुहा जिवो New Delhi Declaration and Manuscript Heritage. Okay. Establishment of expert working group with respect to there are manuscript जोटा कि decipher ही पारुनी ताको हमें translate करी पारुने. So this will be conducted, digitization भी करा जिवो. Launch of Manuscript Research Partner programs targeting young scholars and script labs. Formation of long-term international collaboration with the institutional linkages. Okay, so these are manuscript heritage outcome या initiative रहिबो. Significance कोन आपण कहि परिबे soft power गोटे जिंस एठी soft power in terms of cultural dominance, cultural hegemony in terms of manuscript and all. ये गोटे जिनस ग्लोबल लीडर. digitize and democratize in the sense everybody can access the Indian knowledge. गोटे टाइम थिला जतबेले वेस्टर्न नॉलेज, वेस्टर्न स्क्रिप्ट ये सब को काफी रिच माना जाउथला, प्रस्पर माना जाउथला एवं जोटा कमे एंग्लिसिस्ट वर्जन भी कहू ब्रिटिश टाइम रे हमें देखिथिले. तो नाउ टाइम हैज कम कि हमें ओरिएंटलिस्ट यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तार फिलॉसफी कल्चर को हमें इंडियन फिलॉसफी कल्चर को हमें जमती ग्लोबल लेवल रे डेमोन्स्ट्रेट करि परिबा. एम्पावर्स अ न्यू जनरेशन थ्रू एमआरपी प्रोग्राम एंड स्क्रिप्ट लैब्स, डीपनिंग एंगेजमेंट विद द कल्चरल हेरिटेज, encourages international collaboration and academic integration. International collaboration and academic integration with respect to manuscript and living sources of knowledge. ये सब जिन सब गुडी को भी शेयर करा जाई परिबो. फर्दर रिसर्च, एकेडमिक ओरिएंटेशन भी रहिबो ये सब जिन सब. एनीवे लेपर्ड टूथ देखिबा गोटे न्यूज कोन अछि. लेपर्ड टूथ, a complaint filed by A.A. Mohammed Hasim, INTUC Youth Wing, alleging that Union Minister and actor Suresh Gopi was seen wearing a pendant resembling a leopard tooth, an apparent violation under the Wildlife Protection Act 1972. तेणु से एक्टर या मिनिस्टर गोटे पेंडेंट पिंधिचंती जोटा कि लेपर्ड रा टूथ टाइप रो देखा जाउची. तेणु दिस इज समथिंग वायोलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. This came in the wake of separate arrest of rapper Bedan Hrindas Murli
for posing a similar item during an unrelated police action. तो ऑलरेडी जन को अरेस्ट करा जाइछि सेम काइंड ऑफ बिहेवियर पाई, तो इट भी कम्स अंडर दैट आई मीन लॉ. July 7, 2025, Kerala Forest Department issued a notice to Gopi directing him to present the pendant and appear before the divisional forest officer in Thrissur, explain the item's origin and nature. They have to explain actually koodi kinithile kon korthile. A preliminary inquiry is underway. The complaint has been summoned to provide evidence and statements by July 21, after which further steps will depend on the verification. Legal context देखिवा. Leopards are protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. 1972 law पछरे स्टोरी कोन स्टोरी होउजी 72 एक तो ब्रिटिश टाइम रे आपण देखिबे hunting was a recreational activities and then hunting was a sports कि जंगल रे पसी कि hunt करिवा. So after independence also the similar thing was going on by those rajas and maharajas जो माने थिले हमर से समय रे से माने सेटा को कंटिन्यू करूथिले. In fact there are places जो जगह रिजर्व फॉरेस्ट आज हमें देखुचे प्रोटेक्टेड एरियाज देखुचे those indigenous tribal people, they started complaining to those nearby rajas and maharajas ki we are not safe from wildlife. Okay, tiger, leopard, cheetah, etc. Cheetah to of course nothile, so we are not safe. So they started further hunting. So that leads to depletion of those wildlife. जोथि पाई कि सरकार decided let's protect this wildlife and let's reduce the human animal conflict. तेणु 72 रे से लौटी आसिला. 72 लॉ आसिला परे तापरे प्रोटेक्शन दिया जाइछि. सेही विषय आमे डिस्कस करबा कि लेपर्ड को शेड्यूल 1 रे रखा जाइछि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रे. पोजेशन ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज अ सीरियस ऑफेंस. आज भी आपण देखिबे लेपर्ड टाइगर रो गोटे स्किन एमती थिवो लोकंकर घरे हेरिटेज हिसाब रे चिपका हेतिवो कांथरे, तो मूवी गुडारे भी आपण देखिथिबे. तो इट वाज रियलिटी से समय रे राइट. Legal penalty, imprisonment of 3 to 7 years and monetary fines for possession of genuine wildlife articles. Wildlife Protection Act 1972 to protect wild animals, birds, plants, wild animals, birds, plants and ensure the ecological and environmental security of India by prohibiting hunting and poaching. Hunting and poaching prohibits and protecting habitats, regulating trade, यानी कि आपण व्यापार यानी कि व्यापार करि परिबे नाही. ट्रेड जेमती हाथी दांत आइवरी होची ट्रेड, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, एस्टाब्लिशिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, ये सबु आपनकर 72 अंडर रे आपनकर आसुची. की फीचर्स जदि आपण देखिबे शेड्यूल टोटल केतरा अछि 1 to 6. द एक्ट कैटेगराइजेस फ्लोरा एंड फना इनटू 6 schedules with varying levels of protection. देखियो Schedule 1 and 2 highest protection, severe penalties, that is tigers, elephants, leopards. 3 and 4 protected but lesser penalties, hyenas, wolves, etc. So 1 to 4 regala. 1 and 2 highest protection, 3 and 4 comparatively less. B होची animals allowed to be hunted, that is vermin. आमे मूसा को घरे मार दउचे, तो जदि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आपण ताकू लॉ बने देबे तो प्रति लोक डेली जेल जाउथबे. सो दैट इज नॉट द थिंग. तो सेमाने होचे वर्मिन जाको मरा जाई पारे, जेमति बर्ड फ्लू हेले हमें कुकुडा को मार दउचे, दे आर नॉट वाइल्ड एनिमल. ओके, तेणु सेमाने होचे वर्मिन, तांको मरा जाई पारे ड्यू टू एनी सच फैक्टर रीजन. तेणु से पान देखिबे कॉमन क्रो, फ्रूट, बैट एमान को मरा जाई पारे. 6 रे प्रोहिबिट्स कल्टीवेशन ट्रेड ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स. सो 6 रे प्लांट्स को प्रोटेक्शन दिया जाइछे. ओके, तेणु 6टी आपनकर शेड्यूल अछि, इजीली मन रहबो. 1 to absolute protection, highest protection in fact, 3 and 4 lesser, V होची vermin या 5 टा होची vermin, VI होची आपनकर plant. प्रोटेक्टेड एरिया सेमती आपनकर अछि जेमती नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व एक्सेट्रा. अमेंडमेंट गोटे करा जाइथिला 2022 रे, जोटा कि 23 टू इफेक्टिव अछि. कोन देखिबा rationalize the schedules गुड को rationalize करा गला. reduce 6 to 4 schedules, merged 3 and 4. 3 and 4 को merge कर दिया गला, यानी कि जोटा कि relatively lesser protected. ओके,
ये जो जस्ट आम डिस्कस करूँ ये दुईटा जाक मर्ज कर दिगला सो ये दुईटा सेमती ही अच्छी टोटाल 3टा होगला ओके देखिए रिटेन 1 and 2 5 and 6 added regulation for exotic species star tortoise macos तेणु exotic species ପାଇଁ भी add करा जाइछि empowered central government to regulate prohibit import trade possession of invasive alien species centralize या central government को power आसी जाइछि okay central government increased penalties for violation fine up to 1 crore for critical offences prohibited wildlife trafficking more strictly by aligning with the sites आपण जानिथिबे जेमति trade in endangered species of wild fauna and flora यानी कि animal and plant okay so these are the amendments तो new amendments रे 6 to 4 कर दिया जाइछि मन रखथिबे तो खास करके जोटा आपण करो प्लांट स्पीसीज को तार तो 6 सेमते रहला ईटा को मर्ज कर दिया गला 3 and 4 को गोटे ही गला ये दीटा ही गला 3टा आउ 5 जोटा वर्मिन अछि जेटा 4टा ही गला बाकी प्लांट गोटे सेपरेट सेट ओके significance forms backbone of India's wildlife conservation policy enables creation expansion of project tiger project elephant helps India meet international commitments convention of biodiversity जोटा अपन करो अछि प्लस साइट्स जोटा trade prohibiting the trade on endangered species okay Odisha related news देखिबा students in Odisha surpass national average in learning levels Parak survey Odisha survey scored above national average in foundational literacy and numeracy conducted by कहा द्वारा देखंतु परख होची गुणवत्ता क्वालिटी ओके आउटकम ऑफ एजुकेशन किए कंडक्ट करथिले NCERT मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन covered over 3 lakh students across 3, 5, 8 and 10 supported by initiatives like Mission Suvidya, Mo School Abhiyan and Tribal Mother Tongue Education and it is aligned with the National Education Policy 2020. Okay, so performing better than the national average. Climate change is reshaping global economy. Former diplomats at conclave in Odisha. तो गोटे कनक्लेव हेतिला गोडी भुवनेश्वर रे पार्टिसिपेंट फ्रॉम 15 प्लस कंट्रीज थीम कौन थिला क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमीज ग्रीन फाइनेंस एंड क्लाइमेट जस्टिस ओडिशा प्रेजेंटेड क्लाइमेट बजट रिन्यूएबल गोल्स एंड साइक्लोन रेजिलिएंट मॉडल emphasized role of climate governance in state policy okay 400-year-old Pandhai Jatra continues to preserve tradition and culture in Barampur celebrated in Barampur Ganjam district post Rath Yatra honor goddesses Budhi Thakurani famous for the clay toy craftsmanship attracts artisans from Odisha and Andhra supported by Mission Shakti GI campaigns and rural tourism revives folk art and local traditions okay Budhi Thakurani Jatra honor करा जाए and अपन करो clay toy जो कंढई हमें कहूचे सेटा को भी मध्य डेमोन्स्ट्रेट करा जाए एनीवे एमसीक्यूज गुडी को सॉल्व करिवे फटाफट परख सर्वे एंड ओडिशा परफॉर्मेंस यदि आपण देखिबे परख सर्वे इज कंडक्टेड बाय NCERT एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओके से हिसाब रे आपण देखिबे अबव द नेशनल एवरेज aligns with the national education policy 2020 so 2 and 3 is the answer next conclave held in Odisha 2025 आंसर कौन हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर जोन ये विषय किसी डिस्कशन नथिला क्रिप्टो करेंसी भी नथिला सो 1 and 3 बी ग्रीन इकोनॉमी एंड क्लाइमेट जस्टिस थर्ड गंजाम रे ओके तो 2 and 3 आंसर हो बाकी यूज आपनकर मेंस क्वेश्चन आज एक्चुअली सैटरडे गोटे एसे टॉपिक आपन को दबार थिला सेटा मु एक्चुअली भूली जाइछि मु आपन क्वेश्चन नै के आसी एसे मु आपन को चैनल ले दे देबी टेलीग्राम चैनल ले मु आपन को एसे टॉपिक टी दे देबी
ओके किसी से प्रॉब्लम नहीं फाइन बाकी जो मैंने आमर फाउंडेशन बैच जॉइन करने को चाहूँगी गुरु कृपा आपणकर गुरु पूर्णिमा अवसर रे सेल आमर अच्छी प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू रो फाउंडेशन बैच कंप्लीट पैकेज गोटे निजर प्रिपरेशन को गोटे स्ट्रक्चर्ड मैनर रे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर रे करिकी एग्जाम को क्वालिफाई करबा पई तेणु सिंपली यूज करेंगे कोड जे इन लाइफ आरंभ 5.0 बैच एटा होची इंग्लिश यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी बैच एटा जदि आप चाहूँगी जॉइन करेंगे एंड एथिरे रहिबो आपनकर 900+ लाइव क्लासेस कंप्लीट लाइव क्लासेस रहिबो कंप्लीट नोट्स आपन को दिया जिवो मेंटरशिप सपोर्ट अच्छी रेगुलर टेस्ट आपनकर कंडक्ट करा जिवो एसए इनरिचमेंट सेशन अच्छी ओडिशा स्पेशल टॉपिक्स गुड को कवर करा जिवो ए सब जिनस अच्छी +12+ टेस्ट सीरीज भी आपन को फ्री मिलिबो एथिरे प्रथम अटेम्प्ट रे जदि आपन प्रिलिम्स क्लियर कर दउछंती तबे आपन को कंप्लीट फी मध्य रिफंड कर दिया जिवो ओके तेणु खास करके जो मैंने आम जॉब होल्डर अच्छा या कौन स्कूल्स अच्छा से इट्स क्वाइट इजी कारण से किसी कर दरकार नहीं केवल आपको कंटेंट दिगला मटेरियल दिगला क्लासेस दिगला आपको केवल कवर करार अच्छे जो मैंने फुल टाइम अच्छा से जॉइन करें बट से लगे पारे नहीं मुझे सबकि करी निजे नोट्स बनैबी निजे ही निजर गाइडेंस ओबियसली सेल्फ स्टडी भी आप बट जो मैंने चाहूँगी आम जॉइन करने सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म यू कैन जॉइन दिस सेमती आमर इंग्लिश ओडिया बैच भी गोटे अच्छी सबकि सेम रहिबो बट एडिशनली फीचर कौन रहिबो एठी गोटे इंग्लिश एंड ओडिया क्लासेस एठी रहिबो माने मीडियम इंग्लिश ओडिया भी रहिबो प्लस कंपलसरी पेपर रो क्लासेस भी रहिबो एठी 23+ टेस्ट सीरीज आपन को फ्री मिलिबो बाकी सेम आपन को प्रीलिम्स यदि क्लियर करिवे फी आपन को रिफंड कर दिया जिवो कोड यूज करिवे जे इन लाइव मन रखते कोड टी इंपोर्टेंट कारण अननेसेसरली यू विल पे मोर अमाउंट सो कोड जदि यूज करेंगे जे इन लाइव आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले ओके फाउंडेशन बैच 25-26 प्रीलिम्स एंड मेंस इंटरव्यू सब प्रकार गाइडेंस टिल इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन टेलीग्राम चैनल आप जॉइन करेंगे पीडीएफ आपको मिल इंस्टा एंड फेसबुक मत आप फॉलो करेंगे यदि किसी डाउट अच्छी क्वेरी अच्छी यू कैन रीच आउट टू मी ओके गरीब पिला कहतु आप जन जॉब होल्डर इट्स गुड प्रेशर बेसी रहिबो नहीं आपन को ऊपर प्रिपरेशन ठीक से करिवे तेणु जदि जॉइन करिवार इच्छा जॉइन करिनियंत कारण डिस्काउंट ऑफर चली अननेसेसरली पुनी डिस्काउंट पर आपण पे करिवे अधिका तेणु आज सैटरडे अच्छी सो आज जॉइन करंतु एवं क्लासेस गुडी को स्टार्ट करंतु एनी अदर क्वेरी एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड ठीक है तो सेशन को ये रखिबा and we'll meet in another session. Thank you very much. Okay, thank you.